I just want to bring your attention to the new test designer. So I'm going to enhance different types of fields. Okay, and the first field that I have enhanced in the new version is the enumeration field. An enumeration field is the list box field. Blood group, O positive, B positive, or we can say HIV, positive, negative, or even RBC morphology. Okay, normocytic, normochromic. Okay, now if you see these three, they are of three, the data entry in these three is of different, it requires a different type of drop down to make it most convenient. For example, we have blood group. Okay, a blood group has maximum 4 or 5 entries, whatever blood groups are there. Okay, so what I'm going to do is I'll just show it to you. So I say I create a field called blood group. Okay, and I say I s- let's call it blood group 2. Okay, and I give it simple values. Okay, now this is a very simple few values, so nothing much to choose from. So a simple drop down list would do for us. Okay, simple drop down list is good enough. Okay, because there are not too many values to really choose from. Okay, so in this case, we will use a drop down list called a simple list. Now look at this. Okay, you can have a default value or you can not have a default value. Let's say it's without a default value. So I say uh, drop down लिस्ट के लिए ये चल जाएगा लाइक सिंपल लिस्ट जैसे अपने ओल्ड वर्जन में ओके बट नाउ consider that we have say HIV1 and it has values negative and positive. Okay, so I'm just going to create a field called as HIV1 and it has just two values. Okay, negative and positive. Negative is normal. Okay, and positive is say not normal, you require reconfirmation. Now, what I'm trying to say out here is that users, see, if it was a normal drop down list, okay, uh, it's not a default value, one second, not as default value. So, our employees may end up doing something like this. Type कर रहे हैं जल्दी जल्दी में, तो they will simply do this and make some error while selecting. So गलती से नेगेटिव का पॉजिटिव कर देंगे. नेगेटिव उनको सिलेक्ट करना है लेकिन 2 बार उन्होंने क्लिक किया तो वो पॉजिटिव सिलेक्ट हो गया. Now in this case we have to make it in such a way कि उसको सिलेक्शन के लिए डेलिबरेट एफर्ट डालना पड़ेगा. ओके, थोड़ा एफर्ट डालेंगे तो वो ज़्यादा केयरफुल रहेंगे. तो इसीलिए वी आर गोइंग टू चेंज द टाइप ऑफ लिस्ट एंड मेक इट अ रेडियो बटन्स लिस्ट. नाउ सी व्हाट हैपेंस. Now you are here, it will not just get selected. You will have to go on the option and then select it. So this is another presentation of a list. This list can be shown either like this or like this. But in this case, I think showing the list as radio buttons makes more sense. Now, sometimes a drop-down list has many values in it. Typical case is like if you take say RBC morphology.
इसमें बहुत सारे वैल्यूज होते हैं और बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं। ओके, तो इसमें अपने को सर्चिंग का ज़रूरत है। ओके, सर्चिंग का ज़रूरत है। तो इसीलिए पहले हम लोग एक सिंपल लिस्ट होती तो बताता हूँ मैं। ओके, सिंपल लिस्ट होती तो क्या होता। ओके, सिंपल लिस्ट होती तो से आई पुट इट एज नॉर्मल साइटिक. Okay, then normochromic. Okay, I say I'm just putting the values, it might not be correct. Okay, then say leukocytosis. Okay, now ऐसे बहुत सारे वैल्यूज होंगे तो एक नॉर्मल लिस्ट में वो सिलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. Okay, so we have added a third type of list type called as search box. In this, just say start typing. So you're here, you move here, you select here, press tab, you come here and you start typing. You see, automatically the values start coming into. So it helps you search. So this is an enhancement. Another enhancement that I have done is now every value will have its own comments. Like for example, अगर ल्यूकोसाइटोसिस है तो तुम कुछ रिकमेंडेशन दोगे, तो वैल्यू स्पेसिफिक कमेंट्स भी होंगे. ओके, जो रिपोर्ट पे प्रिंट होंगे. यानी इफ यू सिलेक्ट वन वैल्यू ल्यूकोसाइटोसिस तो उसकी एक कमेंट, अगर दूसरा नॉर्मोसाइटिक तो अगर उसको कमेंट देना है तो you can give a comment for that also and it will come in the report. So this is like additional commentary. जो रिमार्क्स हम देते हैं यहाँ पे प्री डिफाइंड रिमार्क्स होगा. ऑलरेडी ये वैल्यू सिलेक्ट किया तो ये रिमार्क आएगा, ये वैल्यू सिलेक्ट करेगा ये रिमार्क आएगा. तो ऐसे काफ़ी इंप्रूवमेंट्स वी आर डूइंग एंड दैट इज ऑल आई वांटेड टू